गुड इवनिंग एवरीवन। आज की जो बातचीत है वो है कमर्शियल रियल एस्टेट में छोटा इन्वेस्टमेंट थ्रू अ फ्रैक्शनल ओनरशिप। Now this is a new concept which is gaining traction in the real estate investment market. और इसके बेसिक्स क्या है उसके बारे में आज थोड़ा सा बातचीत करेंगे। Once I'm done, if you have any questions, you are most welcome to ask and clarify your queries. सो स्टेप वन, अगर हम पहले समझें कि कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए क्या चैलेंजेस आते हैं एंड व्हाई शुड समवन बी मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन कमर्शियल रियल एस्टेट। आपने बहुत सुना होगा, आई मीन इफ यू डू अ गूगल सर्च और अ यूट्यूब सर्च, you will find there are a lot of people who advise on making investments in commercial real estate because of the fact कि rental yields better हैं और आपको capital appreciation better मिलता है. So in a way, people tend to say or tell that commercial real estate has a better return on investment overall होल्डिंग पीरियड. बट इसी के साथ में चैलेंजेस हैं. सबसे बड़ा चैलेंज कि अगर आपको कोई भी ग्रेड ए कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, विच इज अ बिग साइज प्रॉपर्टी, विच इज लेट्स से अ बिग फ्लोर प्लेट और एनी सच कमर्शियल रियल एस्टेट, तो उसमें आपको अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है एंड उतने प्रोपोर्शन में लोन्स भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू बाय अ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट वर्थ 1 crore, I probably need around 20 odd lakhs from my own pocket, 20 से 25 लाख और 70 से 75 लाख का मुझे लोन मिल जाता है. वहीं अगर मुझे 1 करोड़ का कमर्शियल रियल एस्टेट लेना होता है तो लोन जो है वो 50 से 60 लाख मिलेगा. तो मेरा अपफ्रंट कॉस्ट बढ़ गया. हो सकता है कि वो भी ना मिले इफ दिस कमर्शियल रियल एस्टेट इज पार्ट ऑफ अ बिगर फ्लोर प्लेट. एंड देन even if I get the loan, the rate of interest is higher, the tenure is lower. As a result, my EMI would be that much bigger. So financing options जो होते हैं commercial real estate के, वो थोड़े से difficult होते हैं. As a result, the retail buyers mostly commercial real estate को लेने में, I mean, they are not able to buy commercial real estate, or one can say that they find it difficult to buy real estate in the commercial segment. So इसको थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए या इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए नाउ मार्केट ऑफर्स ऑप्शंस इन बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप. So what is fractional ownership? Now this has emerged as a very popular investment option because it kind of addresses the need for diversification. आप 10, 15, 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके and you can get into a grade A commercial property, start earning a rental return, as well as enjoy the growth of the property. So, fractional ownership kind of, it provides an opportunity for retail investors to make smaller investments in high value, high grade commercial property जो otherwise उनकी reach से बाहर होगी. For example, office let's say 10 crore, 15 crore, इसमें आप 20 से 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अपना ओनरशिप शेयर ले सकते हैं and you can continue to get the rental returns for the entire property in proportion to your share in the fractional share in that particular property. So इसमें होता क्या है कि it's like the structure is generally that a holding company is made. So a group of investors get together. There is a principal, he creates a holding company. The asset is held by the holding company or the asset owning company. So let's say there is a commercial asset worth 20 crores. X company owns that 20 crores, and the X company can have a structure of maybe a private limited company or a limited liability partnership. The balance of the property then 20 crores ko, if let's say the share has been fixed at 10 lakh rupees per share, then for 1 crore there are 10 partners, and 20 crore there are going to be 200 partners. So these 200 partners, they can now invest in the fractional ownership in parts of 10 lakhs, 10 lakh, 20 lakh, 30 lakh, 40 lakh, 50 lakh, and they pool in the money. The company who continues to hold the property and they become the owners of the company or the part owners or the limited liability partners of the company. And उस प्रॉपर्टी से जो रेंटल आता है वो इनको अपने प्रोपोर्शन में डिवाइड होने लग जाता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे प्रॉपर्टी का कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, जैसे जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, so these limited liability partners or the private limited company shareholders,
they can then trade their property to the next buyer in the market by selling their share or the liability partnership from the holding entity of which they are a partner or a private limited company के shareholders. Usually, now what this company does is further they engage a third party professional management organization which will further manage the property on their behalf. प्रॉपर्टी की पीरियोडिक मेंटेनेंस करनी है, प्रॉपर्टी का रेंट की जो यील्ड है वो लेना है, टेनेंट से रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं, पीरियोडिक रिवीजन ऑफ रेंट करना है, या 8-9 साल के बाद में जो वेकेट हो रहा है तो उसमें नया टेनेंट लाना है. आई मीन बेसिकली मैनेजिंग दी फॉर मैनेजिंग दी एसेट दे कैन एंगेज अ थर्ड पार्टी, यूजुअली दे डू, एंड उसकी कॉस्ट भी फिर सब में डिवाइड हो जाती है इन ऑल दीज फ्रैक्शनल ओनर्स. So what is practically happening is that a big asset is now managed by a pool of people. So they divide the cost and they divide the profits. Over a period of time, the rental yields are coming to them and the capital appreciation is also coming to them. इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो खासकर अब ज्यादा ट्रैक्शन लेने लग गया है आफ्टर द इंडेक्सेशन बेनिफिट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द डेट फंड्स है, जो अभी तक के डेट फंड वाले इन्वेस्टर्स थे, दोज हु यूज्ड टू इन्वेस्ट इन डेट फंड्स फॉर अ फिक्स्ड इनकम और फॉर एन्युटी काइंड ऑफ इनकम, they are now looking more favorably or more aggressively towards fractional ownership, because fractional ownership में आपको जो भी growth मिलेगा over a period of time after 1 year, because you are a shareholder in a company, and आपको उसमें indexation benefit भी मिलेगा. So on one side the investor is getting the returns which are at par with a debt fund return in the sense of a regular income which is in the form of the rentals of the underlying property जिसको ये fractional ownership company ने own कर रखा है. कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है, और जब ये इन्वेस्टर अपने कैपिटल अप्रिसिएशन लेने के बाद में 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल जब भी कभी सेल करते हैं तो इनको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. सो अ फ्रैक्शनल ओनरशिप इन अ कमर्शियल ए ग्रेड प्रॉपर्टी combines and helps to provide the best of the practices of commercial real estate, best of the benefits of commercial real estate, taxation, and a safe, sound structure, engaging the professional agencies which maintain the overall rhythm of the procedure and the working. So, one of the biggest benefit of fractional ownership is reduced risk. By spreading the investment, let's say I want to make investments worth 50 lakh rupees. Instead of buying one commercial property, I can spread it to say 3 commercial properties, or I can spread my overall investment and have fractional ownership also as a part of my investment portfolio. So I have a commercial property portfolio, I can have a debt fund portfolio, and I can have an equity mutual fund portfolio. So this becomes a part of your overall investment plan, providing you diversification, growth, and regular income. Additionally, fractional ownership provides liquidity. Why I say liquidity is because जितना छोटा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है उतने उसके बायर्स ज्यादा हैं. The number of people who can afford a smaller investment are more as compared to bigger investment. So one has kind of divided the entire big chunk of commercial real estate into smaller, easily digestible pieces. Therefore, in terms of resale also, it has improved the opportunities for the investors to be able to trade it once the capital appreciation has happened. Because although मुझे फायदा हो गया, but मेरा 10 लाख का 30 लाख हो, so still finding a buyer at 30 lakh rupees is easier as compared to if I was owning a property worth say 2 crore and I wanted to find a buyer at 6 crore. So it increases the liquidity and allows the investors to buy and sell shares more easily. Instead of had they invested in one single property, which was a huge, big commercial property, उसके लिए एक बायर ढूंढने के लिए ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, because बड़े टिकट का एलिजिबल बायर ढूंढना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. सो बट ऐसा नहीं है दैट एवरीथिंग इज राइट विद दिस. देयर आर चैलेंजेस लाइक ऑल अदर इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस. देयर आर बाउंड टू बी चैलेंजेस इन फ्रैक्शनल ओनरशिप आल्सो.
सबसे बड़ा चैलेंज है अगर ये जो 100, 200, 150, 50 जो जो बायर साथ आए हैं, इनके इंटरनल challenges, how do you manage their relationships, disagreements, disputes, then multiple investors involved हैं, so reaching consensus on various topics, say the property needs maintenance after 10 years, उसका खर्चा होना है, so उसके अंदर disputes create होते हैं कि the investors may not be very willing to make that kind of an expense which needs to be made for keeping the property tenable. तो इसके अलावा इन्वेस्टर्स की प्रायोरिटीज के अंदर फर्क हो सकता है, शेयर होल्डिंग में हो सकता है किसी के पास में ज्यादा शेयर्स हैं, सो देयर माइट बी अ डोमिनेंट इन्वेस्टर इन द ग्रुप, सो ऑल दीज डायनामिक्स डू कम इनटू प्ले। और इसको मिटिगेट करने का यूजुअली तरीका ये है दैट व्हेन the initial partnership or the initial private limited company is being formed, then the memorandum of understanding should have at least the basic bare minimum points covered for managing the relationship amongst the shareholders or the limited liability partners as the case may be. फिर भी इसके अंदर शुरू में जब बन रहा है ये, so there is a need for a lot of technical and legal paperwork to be done so that the partners in terms of their exchanges, day-to-day movement, day-to-day management, division of profits, division of cost, उस सब के अंदर minimum frictions हो. Now, what are the kind of properties which are suitable for fractional ownership? If you intend to get into this kind of a transaction, let's say आप 8, 10, 15, 20 फ्रेंड्स हैं, कोर्समेट्स हैं, कॉलेज बैचमेट्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम करते हैं, आप एक ऑफिस में 10-15 कलीग्स हैं, आप 10-10, 20-20 लाख रुपए जमा करके इस तरह का कुछ करना चाहते हैं. वन, grade A office buildings are suitable. Two, रिटेल स्पेसेस आर सुटेबल, जो थोड़ा बड़ा रिटेल से फूड कोर्ट आपने लिया, फूड कोर्ट के अंदर यू कैन हैव डिफरेंट स्टॉल्स कंबाइंड अंडर वन अम्ब्रेला एंड बीइंग ओन्ड बाय 50, 60, 70, 80 different shareholders or liability partnerships at the helm of the affair. So ज्यादातर इसके अंदर अगर आप इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेटर इज टू हैव रेंट यील्डिंग प्रॉपर्टी जिससे स्टेबल कैश फ्लो आते हैं, सो दैट योर इन्वेस्टमेंट्स आर not exactly, only waiting to compound. The entire idea of making investment in commercial real estate is to be able to get adequate and regular cash flow. तो जहाँ पर लॉन्ग टर्म लीज अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में मिल रहा है विद अ स्टेबल tenant, say 6 years, 9 years, 12-year leases, then getting into a commercial fractional ownership kind of arrangement can be very beneficial. इसमें एक और बात देखें, एट टाइम्स जब लॉन्ग टर्म लीजेस होती है तो जो टेनेंट होता है वो भी अपनी तरफ से कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है इन इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी, गेटिंग द इंटीरियर्स डन एंड कस्टमाइजिंग एंड टेलरिंग द प्रॉपर्टी. अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है, सो देन इट इज इवन मोर बेनिफिशियल बिकॉज नाउ टेनेंट हैज अ सर्टेन स्टिकीनेस, टेनेंट का उसमें खर्चा हो गया है, सो टेनेंट के पास में उस प्रॉपर्टी में अपनी लीज टर्म 9 साल, 12 साल, 15 साल जितने टाइम का भी है वो लीज टर्म कंप्लीट करने का एडिशनल इंसेंटिव है. एंड जो थोड़ा सा ऑब्वियसली कमर्शियल प्रॉपर्टी जितना लोकेशन वाइज अगर आप देखते हैं बेटर है, स्पेशली इफ इट इज रिटेल एसेट यू आर बाइंग, देन डिजायरेबल रिटेल लोकेशन कैन हेल्प इन future for the capital growth as well as the rental growth of the property. Finally, I can say that fractional ownership kind of combines the best of the practices and the best of the opportunities of commercial real estate. It gives you a lot of financial structuring, safety, tax benefits if you want to make a sale after holding the property for a certain period. जो आपको रेंटल इनकम्स आती हैं वो भी आपको अप टिल 70% आर टैक्सेबल. सो इफ यू स्ट्रक्चर योर फ्रैक्शनल ओनरशिप वेल, you can actually create a good portfolio which is well diversified, which has the element of regular income as well as the capital growth over a period of time. So जो लोग अभी तक कमर्शियल रियल एस्टेट में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते थे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टेनेंट कहाँ से लाएंगे या समझ नहीं आता है या बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसे अप्रोच कैसे करें, तो दे कैन easily find options in this kind of arrangement. Last month we had held
ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर 5-5 लाख रुपए के कमर्शियल रियल एस्टेट के फ्रैक्शन ओनरशिप ऑप्शंस थे. And presently also we are working with the organization for a Bangalore based asset which is now being taken up by a elder care company wherein they are developing a complete elder care home. 25 crore ka asset wherein an investor can get an equity at around 12.5 lakh. So these are the kind of investments. मतलब 25 crore के investment का return would be approximately 7 to 8% का rental yield आ रहा है. प्लस 10 साल में ये प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ के लेट्स से 50 करोड़ होता है. आज जो 12.5 लाख रुपए का एक बेसिक इन्वेस्टमेंट करता है उन्हें साल का 6 से 7% का रिटर्न मिल जाता है विच इज better than their fixed deposit returns. And say in 10 years, the prices have doubled or more than that, given the fact that this property is located in a established area in Bangalore, ready to move property. So the overall return over a period of 10 years, rental and capital appreciation combined, can be easily to the tune of 20 to 22%. So this is with safety of the debt and returns of an equity. These kind of arrangements is what are possible in the fractional ownership arrangement in commercial real estate. So this was the brief of what I had to share. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.